कैसे हो आप सभी। आज कोशिश करेंगे खत्म करें इसको। ठीक है, तो आज मैं इसी मोटिव से आया हूँ, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, जिससे मई के अंदर से मैं कोशिश करता आपको रिवाइज कर सकूँ, तो मेजर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। कैसे हो आप सभी। तो सारी चीज़ें सही चल रही है, ऑडियो ऑडियो भी ठीक चल रहा है। चलो शुरू करें फिर, आज का काम शुरू करते हैं। चलो, चीज़ें मैनेज करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। चलिए शुरू करो। हम दोस्तों, हम कब का है भैया, ये बता दो तुम पहले, पता चले। कपड़े उड़ गए मेरे। तो मॉर्निंग मॉडरेट आईएमडी की वेटिंग किया जा सकता है। क्या लगता है, कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि आईएमडी की वेटिंग किया जा सकता है। नियर रेस्टोरेंट इज 40 किलोमीटर अवे एज 5:55। ठीक है, सी फूड पॉडकास्ट। अगर मेरे कपड़े उड़ के गए, मेरी बीवी मेरे को मार देगी, दैट इज फॉर श्योर। समझ रहे हो। चलो, तो मौसम विभाग की भी सुनने लगे तो बेच चल दिया। मौसम विभाग की बात गधे मारी लाल। मौसम विभाग के ना लोगों पे ना उस पर। खैर आगे बढ़ो, शुरू करते हैं। पुनो पुनो थोरियम 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 मोल्टन साल्ट रिएक्टर। भाई साहब खुद ही बोल दिया टीम ऐसा सब कुछ। चाइना सक्सेसफुली अचीव द फर्स्ट एवर थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन। ये क्योंकि थोरियम, अच्छा ये कमाल की बात है, भारत पे यूरेनियम नहीं है। कोई अगर थोरियम से हम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन कर देते हैं, तो इसमें भारत को, इंडिया का बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है तो हमारी एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ। अबाउट थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर, इट इज फोर्थ सिमुलेशन एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम दैट यूजेस हाई टेम्परेचर मोल्टन सॉल्ट एज अ कूलेंट। कूलेंट क्या होता है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और जब स्पेशली जब जैसे मान लीजिए लो तेजी से घूम रहा है वो आपका रिएक्टर, तो अब इसको ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक लगाओगे तो बहुत तेजी से मतलब रुकेगा, और जब रुकेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो उस केस के अंदर आप जनरली वाटर यूज करते हो। वाटर यूज करते हो कहाँ पे यूज करते हो, वाटर वाटर यूज करते हैं यूरेनियम वाले में, U32 वाले में। ठीक है, तो जो कौन सा आइसोटोप होगा, आइसोटोप ध्यान नहीं आ रहा तो U32 बोल रहा था मैं उसको फ्रेंड, U32 और U33। तो उन केस के अंदर हार्ड वाटर यूज होता है वो, बट वो डिस्पोज करने का प्रॉब्लम रहता है। इसके अंदर मोल्टन साल्ट होती है। ठीक है, तो मैं चाइना DMSR इज करंटली द ओनली ऑपरेशन मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर इन द वर्ल्ड। तो ये प्लीज याद रखना। और ये फिल्म की लाइन बन जाएगी तुम्हारी, फिल्म की स्टेटमेंट है। ठीक है, फिल्म की स्टेटमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। की फीचर, कूल विदाउट वाटर, कूल विदाउट वाटर at atmospheric pressure, deliver a high temperature output. Key advantages, key advantages क्या, passive safety feature, if an MSR is too hot, salt plug melts, stopping the reactor. ठीक है, small high level nuclear waste footprint, thorium generate fewer long lived minor actinides, which is radioactive metallic elements that the plutonium fuels. Yeah, that extract more energy from the fuel itself. Thorium fuels. Thorium has converted ये रहा U33 और U32, ये बोल रहा था। ठीक है, तो यूरेनियम 233। ठीक है, इन रिएक्टर बिफोर इट कैन बी यूजर्स, बिल्कुल सही बात है। जनरली मिलता है यूरेनियम हमारे को 232, तो उसको एनहांस करके 233 किया जाता है, उसके बाद वो फ्यूज के लिए तैयार हो जाता है। थोरियम उसका अपडेट कर दो, ये था ओनली नाइट्रोजन लकड़ी आइसोटोप होता है, तो थोरियम में टेंशन नहीं, थोरियम का कुछ नहीं।
ठीक है। उसके बाद इट इज 3 टाइम्स मोर अबंडेंट इन द नेचर देन द यूरेनियम। तो ये इसलिए हम लोगों के लिए जैकपॉट है अगर ये टेक्नोलॉजी यूज हो जाती है और भारत उस पे अच्छे से काम कर लेता है तो फ्यूचर बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। Despite its widespread availability, the metal utilization is restricted by its higher extraction cost। क्यों? क्योंकि जैसे मोनाजाइट रेट में मिल जाएगा, ये मिलेगी कहाँ पे? ये मिलेगी सैंड में। ये सैंड कहाँ है? बीच पे। बीच कहाँ है? केरला में, तमिलनाडु। तो अब ये मोनोजाइट सैंड को एक्सट्रैक्ट करना ये अपने आप में एक महाभारत है। तो इसका एक्सट्रैक्शन एक मुश्किल काम है और एक्सट्रैक्शन को करके उसको यूटिलाइज करना वो हो रहा है, तो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाती है। बट एक बार साइट पता चल जाए ना तो फिर प्लांट लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वॉल्यूम का खेल मिल जाएगा वो। एडवांस हैवी रिएक्ट वाटर रिएक्टर, ये मैंने कहा ही था तुमको कि होता क्या है कि जहाँ से कूल डाउन फेज में डालना होता है ना, तो हमारे पास तो सैंड वाला मेथड है नहीं, तो हम हैवी वाटर यूज कर सकते हैं। हैवी वाटर मतलब मोर एसिडिक, मोर सॉल्टिक इन नेचर। Currently under development with Bhabha Atomic Research Center would serve as a technology demonstrator for the thorium fuel cycles. Also, India is developing an Indian molten salt breeder reactor, तो हम भी कर रहे हैं। तो अभी ओनली जो फंक्शनल है वो चाइना के पास ही है और दूसरा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। थोरियम रिजर्व इन इंडिया, इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम, देख लो। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये फील्डिंग का फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद केरला एंड उड़ीसा हैव रिच रिजर्व ऑफ मोनोजाइट which contain 8 to 10% of the thorium. It is also found in the Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Jharkhand. Sorry, ठीक है। आवाज वगैरह सही आ रही है, सारी चीजें सही है, बेस्ट है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा सब सही चल रहा है तो बता दो, अगर कुछ चल रहा है तो बताओ। ठीक है? चलो आगे। तो लिथियम आयन, लिथियम आयन बेसिकली बैटरी होती है जो हम बैटरी यूज करते हैं जिसके अंदर मोबाइल फोन चल रहा है। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो आपका चार्ज हो रहा है तो उसमें हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। काफी छोटी अच्छी बैटरी, क्योंकि इसमें इंडिया लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन हरियाणा। ओ भाई साहब, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ये ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था बीसीएस में जब यूएस मिले तो। फिर ये आते हैं इंडिया लार्जेस्ट सोडियम और लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी हरियाणा में। टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, यस। इन इट लिथियम आयन move between a negative electrode and a positive electrode, ठीक है, who are non-aqueous electrolyte during charging and discharging. Benefit of lithium ion battery: high energy density, ठीक है, more energy compactly, offer longer cycle between the charges, ठीक है, लाइट वेट होती है, लोअर टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू ओल्डर लेड एसिड बैटरी, ठीक है, इट इज मच लाइटर ड्यू टू यूज ऑफ लेस टॉक्सिक लाइट वेट lithium and carbon electrodes, ठीक है। Excellent performance, they provide good cycling stability, efficiency and reliability with low self discharge and generally no memory effect due to down slow down due to repeated charging, ठीक है। अब आ जाओ रिलेटेड न्यूज। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी, अब ये क्या काम है? ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हैज एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट for the commercialization of an indigenous battery recycling technology that utilizes dual mode wet and dry black mass recovery. What is black mass? When a lithium ion battery reaches the end of its life, it does not stop being valuable. Inside that use a battery's dark, powdery substance known as the black mass, a mix of critical minerals. Okay, these can be recovered, refined, reused,
to the power the next generation of the clean energy. ओके, तो इसको संभाल के रखो भाई। बैटरियाँ फोन की फेंकनी नहीं है कल से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी इज a process that extract valuable material like lithium, cobalt, nickel from used lithium ion batteries, ठीक है। ये कमाल की चीज़ पता चली। उसके बाद रिसर्च टीम वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक हैज डेवलप्ड अ सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरीज, SIB, सोडियम आयन बैटरीज। ये क्या कहानी है? दैट कैन चार्ज अप टू 80% इन द जस्ट 6 मिनट। और ले भाई, इसकी ईवी बनवा दो, मजा ही आ जाएगा। 80% in just 6 minutes and over last over 3000 charge cycles। नाइस। तो ईवी बनवाओ इसकी यार, बहुत ईवी के काम की चीजें। About sodium ion battery. Sodium ion battery are type of chargeable battery similar to the lithium battery, but carry the charge using sodium ions and instead of the lithium ion. Okay. Advantages of sodium ion batteries compared to the lithium ion batteries. Energy density, SIB generally have lower energy density than the lithium ion. ठीक है। Safety में क्या है? SIBs can be transported at zero voltage, reducing fire risk. तो यार मतलब सोडियम बैटरी आएंगे अब आगे, ठीक है। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, नई तरीके की बैटरी आएंगी। अरे यहाँ डिजिट लगा रहे हैं, यहाँ तो सोडियम की बात हो रही है। तो जो हम करते हैं तब तक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। Wine news. India's largest first MWH scale vanadium redox flow battery inaugurated at the NTPC Mitra. Okay. Flow batteries क्या होती हैं? Flow batteries along with the solid state batteries are one of the next generation battery technologies and are emerging as alternative to the lithium ion for grid scale application. Okay. क्या है देखिए जरा। About next gen battery technology. Flow batteries. Flow batteries are powered by the reduction oxidation redox reaction. Okay, redox reaction and involve two different liquid electrolytes. Okay, जैसे पुराने बैटरी में होगा that pass ion or proton back and forth through a porous membrane. ठीक है। These batteries can store larger amounts of energy as much as the size of electrolyte cells can contain and do not use flammable or polluting materials. Type of flow battery: vanadium redox, zinc bromide, iron salt organic system. Solid state batteries: these use solid electrolyte solutions which do not need us different separators. Solid state batteries have several advantages over conventional batteries. Improved safety, when solid electrolytes are less prone to leakages or combustion compared to the liquid electrolyte. Potential to store more energy in the same volume or weight, capable of charging 4 to 6 times faster than the liquid electrolyte batteries. इससे बढ़िया तो मैं खुद ही करा देता हूँ। मेंस की जिसको भी तैयारी करनी है मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। आओ मिसलिनियस में क्या क्या है भाई? जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। आओ भाई तुम आओ, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी आजकल न्यूज में चलता है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी refer to a set of tools or techniques used to collect, analyze, and visualize spatial geographic data. ठीक है? Geographic information system capture, store, analyze spatial data. It was help in mapping and visualization of geographic features used in urban planning, agriculture, and disaster response. GPS क्या है? Uses satellite signals to determine precise location, essential for navigation, transportation, and military operations. Remote sensing में collect data from satellite and aerial
Platforms monitor environmental changes, land use, and natural disasters like cartography and spatial analysis. Represent geographic data in maps, aid in policy making and resource management. Operation Dronagiri. Haryana has constituted state and district level committees for implementation of the Operation Dronagiri, a pilot project under National Geospatial Policy 2022 and will be implemented by the Geospatial Innovation Cell Department of the DST. मतलब DST की बात हो रही है. Purpose है to demonstrate the potential of application of the geospatial technology and innovation in improving the quality of life of citizens and ease of doing business. First phase implementation in the state of UP, Haryana, Assam, Andhra Pradesh, and Maharashtra. Okay. Focus is on agriculture, livelihood, logistics, transport, urban planning, infrastructure, development on the integrated geospatial data sharing use cases. National Geospatial Policy vision position India as a global leader in geospatial sector, develop national framework, and enable visible availability of the geospatial data. Institutional framework policy provide for the establishment of the geospatial data promotion and the development committee as apex body for the formulating guidelines and program for promotion geospatial sector. कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सिंपल सी बात है, क्या समझाऊं तुम्हें जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज लग रही है. नोडल एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा पढ़ते ही चले जाओ, कुछ भी नहीं लग. Other key initiative taken by the promote geospatial sector, national geospatial mission. क्या बनाऊँ उसका मैं? Aims to develop foundational geospatial infrastructure, national geospatial data repository, a centralized platform for the geospatial data management and access, continuously operating reference station launched by SOI. आओ भैया तुम आओ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स. किसी को देखना हो तो जाओ यूट्यूब पे और सर्च करो शुभ्रा रंजन सौरभ कौशिक. जैसे ही ये लिखोगे प्लेलिस्ट आ जाएगी. प्लेलिस्ट के अंदर क्रिटिकल मिनरल आएंगे. बेहतरीन पढ़ाया था, मजा आ जाएगा. ठीक है. द क्वाड यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव. ठीक है. हम सोचते हैं क्रिटिकल मिनरल की वजह से ही चाइना के ऊपर सैंक्शंस नहीं लग पाए. यूएस ने लगाए थे बट चाइना बोला कहता कि लाडली क्रिटिकल मिनरल है हमारे पास, एक नहीं दूंगा, सुधर जा. वो कहता भाई सुधर गया भाई, ठीक है. तो क्रिटिकल मिनरल जिसके पास है वो आज की डेट में राजा है. 100 बात की बात. तो क्रिटिकल मिनरल आर नेचुरली अग्रिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड. These are classified as the critical due to high demand, supply restricted for. Ministry of Mines has released a list of 30 critical minerals. वही खड़े हो जाएंगे, देख लेते. ठीक है. Other initiative taken to the secure critical mineral supply. India Mine and Mineral Act आया 2023 में, enable exploration and the mining of the critical mineral. National Critical Mineral Mission, ये नेशनल मिनरल पॉलिसी एक्ट 2019. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द एग्रीमेंट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. इंडिया ज्वाइन दिस यूएस लेड इनिशिएटिव इन 2023. खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, a joint venture company of Ministry of Mines to acquire critical minerals globally. ठीक है. Nickel, copper, platinum group of elements, sulfide. India's first ever discovery nickel, copper, platinum group element sulfide at भालुकोना जामनी ब्लॉक ऑफ महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के अंदर मिला था ये आपको निकल, कॉपर, प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट सल्फाइड. ठीक है. तो ये याद रखना बस, इतनी नाम कहानी याद रखनी. ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. एप्लीकेशन ऑफ आपका क्या है, निकल, कॉपर, प्लेटिनियम एलिमेंट. तो निकल यूजिंग द स्टेनलेस स्टील अलॉय बैटरीज. कॉपर इलेक्ट्रिकल विंड वायरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शंस, EGEs. ये प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है. कैटलिस्ट, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा.
Strategic value critical for clean energy technologies, EVs, defense application, making it a key mineral group of energy transitions. Rare earth elements, reeds, reeds that in the retaliation to the US tariffs, China restricts exports of rare earth elements. So, क्या है rare earth elements? Rare earth elements are a set of supralustrous, silvery white, soft heavy metals in periodic table. Example: cerium, yttrium, europium, etc. Though found frequently, however, they are difficult to extract as they are not found in the concentrated. Potential application: electronic and electrical. They are used in television, screen, computer, monitor, हर जगह पे यूज होगा. Renewable energy and the green technology, RE alloy, prevent corrosion, सही बात है. अरे मस्त चीज है, मतलब हर जगह यूज होता है यार. सिंपल सा, तो कोई कुछ नहीं है. अगर वो बोले इसमें यूज होता है, हाँ यूज होता है. इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूज होता है. ये सब मैगन में यूज होता है. डिफेंस में यूज होता है, इंडस्ट्रियल, हाँ सब जगह यूज होता है भाई साहब. लेजेंड है. चाइना डोमिनेट बता चुका मैं तुमको. दूसरा जो है ग्लोबल प्रोडक्शन वहाँ पे ये. ठीक है, तो ये सिचुएशन है. चीना जैसा हो, चाइना भाई जैसा हो, तो अगर हम इसको अभी भाई नहीं बोलते तो ये हमको बात बोल देगा. तो चाइना को किसी की जरूरत नहीं है आने वाले टाइम पे. उसके लिए सारी मार्केट है, और इंडिया से और सिर्फ उसके लिए मार्केट है. क्या है, जिसको खा जाएगा सबको खा जाएगा, किसी को नहीं बचेगा. उसके पास 8% है, बट वो 8% नहीं. तब वो एक्सप्लोर एक्सप्लोर नहीं किया मैंने. वो बात की बात. Distribution of REE in India. India's REE results are mostly found in the monazite kind. बता चुका मैं तुमको, केरला में मिलती है. Coastal states have the most rare earth deposits, namely Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, and the Odisha. Next fact की बात करूँ, it involves working with material and devices at the nanoscale, typically ranging from the 1 to the 100 nanometer in size, nanoparticle. On the nanometer scale, materials may exhibit unusual properties. Their properties depends on shape, size, surface characteristics, and inner structure. Okay. Type natural nanomaterial, volcanic ash, artificial nanomaterial, carbon nanotubes. Concern or challenge potential toxic nanoparticles to the human and the environment. The application of the nanotechnology, agriculture nanofertilizers, using uptake 90 to the 100% of the utilization efficiency. Nano biosensor monitor soil condition, etc. Health, better imaging or diagnostic target drug delivery, etc. Energy, nanostructure solar cells could be cheaper to the manufacture and the easier to install, etc. Environment, nanomaterial can be employed in water purification, desalination technology, etc. Electronics and IT, quantum dots and the nanostructure can be used to develop advanced display lighting, etc. Other cosmetics, use nanoparticles of some metallic oxide, etc. Nano nanozyme enzyme दवाई nanozyme. क्या है nanozyme, देख लेते हैं एक बार. Researchers at the IISc developed an artificial metal based nanozyme. So vanadium pentoxide, याद रखना, vanadium pentoxide, that is nanozyme, to clamp down an abnormal blood clotting. ओके, ये तो कमाल की चीज है. caused by condition like the pulmonary thromboy, पता नहीं क्या चमत्कारी सा लिखे वो. तो पढ़ लेना, तुमसे पढ़ा जाता. तो बेसिकली होता क्या कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना, उससे हार्ट अटैक बन जाता है. तो सही करने के लिए उन्होंने एंजाइम बनाया हो. देखिए कैसा होता है.
डब्बी लगी नहीं। भाई भाई मैं रोबोट ही तो हूँ। इंसान तो हूँ नहीं, रोबोट हूँ मैं। भाई ऐसा तो दिखा रखा है मुझे कुछ बढ़िया सा तो है नहीं, प्रोडक्ट का जो मजा ही है। और under normal condition an injured blood vessel witness the activation of the platelets, बिल्कुल सही बात है। स्पेशली इन केस ऑफ, जैसे मतलब ब्लड क्लॉटिंग होती है, चोट लग गई, घिसट लग गई, तो उसके बाद आपके प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं वो वोंड भरने में, जो वाइट होती है स्पेशली वो। ठीक है, दूसरा डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया एक्सेट्रा में जो वेक्टर डिसीज है, उन केसेस के अंदर आपके प्लेटलेट्स पे ही सबसे ज़्यादा हमला होता है और प्लेटलेट्स ही चढ़ाए जाते हैं आपको। समझ रहे हो, ये बीमारी को खत्म कराते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड इंजर्ड ब्लड वेसल witness the activation of the platelets to form clot while under PTE over activation of platelets occur causing excess blood clot or thorium leading to the mortality। ठीक है भाई, अब आगे of enzyme, they are the nanomaterial with intrinsic enzyme-like properties. They compared to the natural enzymes, they exhibit the unique advantages, including high catalytic activity, low force, high stability, easy mass production. Fertilizers. Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited to set up first overseas nano fertilizer plant in Brazil. ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, ब्राजील के अंदर खोल रहे हैं जो सेकेंड मीटिंग को। तो इसको है लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर इन 2021, देन द नैनो डीएपी, नैनो डैप पे क्वेश्चन आया हुआ अबाउट नैनो फर्टिलाइजर्स, nutrients encapsulated or coated with nanomaterial measuring 100 nanometer or less enable controlled release and its subsequent slow diffusion into the soil। Nanosulfur. Terry. Scientists have developed nanosulfur which reportedly increase mustard yield by 30 to 40%. About Terry, nanosulfur. It is completely green product that use biological agents like plant promoting bacteria that secretes enzymes and metabolites. This makes it different from nanofertilizers such as nanourea. Nanosulfur has antibacterial insecticidal properties। आ जाओ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF क्या चीज है। ओ, पितागवा, रिचर्ड रॉबसन, उमार एंड जग्गी ऑडिट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ले भाई तो कैसे आते रहे। रिचर्ड को सॉरी मुंह से निकला ओ माँ। रिचर्ड को सुसु लगा और बोला ओ माँ। सॉरी मैं भाई क्या बोलूँ, तो ऐसी बन गई क्या करूँ, ऐसे ही याद होगा। मैं मेरे को और कोई तो आने का दिमाग में, उसको गधे को क्यों ना रखना था सुसु है, यही बन रहा है क्योंकि ये तो नाम पूछ लेगा वो। तो क्या करूँ भाई, जो है तो है। तो रिचर्ड को सुसु लगा और मुंह से निकला ओ माँ। ठीक है, तो रिचर्ड सुसुमू ओमार, रिचर्ड को सुसु लगा और नेबल नोबेल प्राइज मिला इनको केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इज अ स्पेशल मटेरियल मेड अप ऑफ टू पार्ट, metal ion, this act like the
Joints or connecting points. Organic molecule, carbon-based molecule like coal. These act like a links or the bridge that connect the metal part together. Okay, ये बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है. दे ज्वाइन थ्रू केमिकल बॉन्ड्स. ये पूछ सकता है कि केमिकल बॉन्ड है कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड है कौन सा, बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड है. तो फॉर्म अ नेटवर्क स्ट्रक्चर. ये नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क मतलब कनेक्टिविटी है. ये स्ट्रक्चर दैट कैन बी वन, टू और थ्री डायमेंशनल with a lot of empty spaces or cavity between them. वो तो दिख भी रहा है, खाली जगह को cavity बोल रहा है. ठीक है. The cavity makes the material highly porous, full of tiny holes inside it. आगे देखते हैं. Origin of the idea of the MOF. The idea to create the MOF came from studying the structure of diamond. ठीक है. MOF can be customized to or absorb or trap specific kind of material like gases, water, chemicals. MOFs are more absorbent than many other porous materials like the zeolites. They act like molecular storehouses, storing gases, liquids, or other materials. Water collection from the dry air. MOFs can capture water vapor from river. Food process. MOF-based packaging material can store the ethylene gas into its cavity, reducing the concentration of the ethylene that is in the shelf life. तब तो याद नहीं होने वाला किसी को. फालतू की बात. ठीक है. पॉल्यूशन कंट्रोल. पॉल्यूशन कंट्रोल कर देगा भाई. ठीक है. Extracting pollutants such as the separating PFAS, antibiotics from the polluted water. Rare earth element, experimentally mining rare earth element. भगवान हो गया भाई, सब कर देगा ये. गैस स्टोरेज, स्टोरिंग गैस सच एज हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा. हाँ जी, बिजली से चलने वाली गाड़ी है. ईवीज पे आ जाओ. ईवीज क्या कहते हैं? नीति आयोग लॉन्च फर्स्ट इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स. About India Electric Mobility Index, first of its kind, tool to benchmark states' progress in e-mobility, was launched in the partnership with the World Resource Institute India. Okay. Had 16 performance indicators under three thematic categories: transport, electrification progress, charging infrastructure readiness, EV search innovation. States into four categories: achievers, frontrunners, performance aspirants. ये तो हम देख चुके हैं. इस तरीके का एक और इन्होंने करा था ना पीछे अभी, participant magazine. 424 Delhi top with a score of 77, followed by the Maharashtra. Type battery EV, entirely battery powered. Hybrid मतलब इसमें दोनों इंजन होते हैं आपका. पेट्रोल इंजन भी होगा, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्यूल सेल्स EV, utilize fuel cell technology to generate electricity for propulsion. Plug-in hybrid EVs use both an engine or rechargeable battery. Main component of the BEV, battery electric vehicle: electric motor, inverter, battery control module, drivetrain, etc. Working principle: power for electric motor is converted from DC battery to AC. Alternative powertrains include propulsion systems that are based on exclusively on the popular internal combustion engine. Full battery electric hydrogen fuel cells. The recent steps taken by India to boost EV adoption. Prime e-drive schemes, central sector scheme supporting E2Ws, मतलब टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ई बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म सिस्टम, डिप्लॉयमेंट ऑफ द 38,000 ई बसेस. PLI advanced chemistry cells support 50 gigawatt hour domestic battery manufacturing. ये अच्छा इनिशिएटिव है. Evolution S program, EV
evolution as program launched by the Department of the Science and Tech for EV startup. Promoting acoustic vehicle alerting system (AVAS), PLI scheme for automobile and the auto components sector. Vehicle to grid V2G technology. Kerala State Electricity Board (KSEB) and IIT Bombay have initiated a pilot project to explore the implementation of vehicle to grid V2G technology. क्या है ये? V2G refers to a technology that enables EV batteries to send power to the back to the grid. When an EV is not in use, it can act as a decentralized battery energy storage device. By incorporating V2G technology, EVs offer an opportunity to facilitate the integration of the renewable energy and support demand response market. It can also help modulate power in the EV battery to reduce the impact of the variable RE on grid and improve grid stability. Yeah. अब आ जाओ हाइपर लूप पे उत्तर TUTR है ठीक है Maharashtra in deal with the IIT Madras startup TUTR Hyperloop Private Limited to build a Hyperloop system. तो बेसिकली होता क्या है ये Hyperloop ट्यूब है आपकी ठीक है ये आपकी ट्रेन होगी ठीक है ये बेसिकली आपकी लेविटेट करेगी कनेक्टेड नहीं होगी ये मैग्नेटिक सिस्टम है ये ऊपर तैरेगी तो इसकी स्पीड बहुत तेज होगी ये अगर बताते हैं The proposed linear induction motor based hyperloop mobility system will connect Jawaharlal Nehru Port Trust in Navi Mumbai to upcoming version Vadhavan Port. तो दो पोर्ट कनेक्ट होंगे आपस में ठीक है About the hyperloop mobility system, it is basically a magnetic levitation. Magnetic levitation मतलब ऊपर तैरते हैं ठीक है सिस्टम where pods travel at ultra high speed through low pressure tube ठीक है If functioning and key component hyperloop function in a sealed tube with minimum air resistance utilizing vacuum and magnetic levitation for delivery. तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी एनर्जी और स्पीड बहुत तेज हो जाएगी ठीक है लीनियर इंडक्शन मोटर propelled pod silently and silently enabling the theoretical speed of the 1 Mach. एक मैक की तो थ्योरी नहीं है अगर मान के चल लो 500 की भी स्पीड निकाल देगा तो बारह नहीं आएगा अभी हमारी जो सो कॉल्ड तेज से तेज गाड़ी है वो 200 किलोमीटर 500 की दे दे बहुत है 1200 तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी तो आगे चलो की कंपोनेंट स्टील ट्यूब्स प्रेशराइज्ड कैप्सूल्स compressor for airflow and air bearing suspensions ठीक है एडवांटेजेस अल्ट्रा हाई स्पीड पुणे से मुंबई 25 मिनट ले भाई हो जाएगा ये तो इसको भी तोड़ दे देहरादून एक्सप्रेस पे एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल कार्बन फ्री नॉइज रिडक्शन लॉजिस्टिक रिडेफिनिशन मूविंग कार्गो क्विकली एंड एक्सपेंसिव डीप ओशन मिशन DOM तो समुद्रयान मिशन ले भाई चंद्रयान देखी जाएगी समुद्रयान भी होता है समुद्रयान मिशन will be launched by the 2026 and as per the National Institute of Ocean and Technology कहता है चलो हम भी हैं कुछ करके दिखाते हैं तो ये कुछ करके दिखा रहे हैं more on the news recently 2 Indian aquanauts dive to the depth of the 4,000 meter 5,000 meter in the Atlantic Ocean ये बहुत बड़ी बात है मैं स्कूबा करने गया था मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा बताऊं मुझे वो ज़्यादा नीचे नहीं लेके गया था मैक्स टू मैक्स लेके गया होगा मान लेते हैं 50-60 मीटर से ज़्यादा भी नहीं लेके गया था मीटर की बात हो रही सिर्फ 50-60 मीटर मेरे कान में दर्द होना शुरू हो गया था मेरे कान में लिटरली पेन होना शुरू हो गया था मैं प्रेशर को फील कर रहा था जो प्रेशर था ना उसे फील कर रहा था तो सोचो हम बात कर रहे हैं एक पहाड़ की ये पहाड़ है 4,000 मीटर का एक पहाड़ होता है
4 किलोमीटर का बेसिकली है, क्या है, 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर का पहाड़, 8 किलोमीटर का एवरेस्ट है। शिवालिक की कोई रेंज पकड़ लो या लेसर हिमालय पकड़ लो, 4 किलोमीटर के, तो 4 किलोमीटर अंदर तो बहुत बड़ी बात है। Placing India among a select group of nations capable of such deep sea exploration. The dives conducted abroad the French submersible nautical in collaboration with the IFREMER, France Marine Research Institute, were led by a team from the NIOT Finland. The dive is prelude to India's Samudrayan mission. So far, only the US, China, Russia, China, France, Japan have carried out the successful deep ocean crewed mission. ये कभी पाताल में जाने की कोशिश नहीं, हम आकाश में जाते हैं, आकाश से ऊपर बढ़ ही नहीं पाए, अब आकाश से हम अब समुद्र में जाएंगे, वही समुद्र में जाएंगे, तो समुद्र वाला सीन बनेगा। समझ रहे हो? आगे देखते हैं। समुद्रयान मिशन a component of a deep ocean mission DOE objective explore ocean at the 6000 मीटर, ये बहुत ज़्यादा बात आ गई। मरियाना ट्रेंच जो है 11 किलोमीटर की, तो मरियाना ट्रेंच का हाफ 6 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं। यूजिंग मैन सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य, ये इनका सपना है। फोर्थ जनरेशन सेल्फ प्रोपेल्ड डीप ओशन scientific submersible vehicle being developed by the NIOT. ठीक है, endurance of 12 hours under normal operation and 96 hours in case of emergency. DOM, Nodal Ministry, Ministry of Earth and Sciences. Purpose: explore deep ocean for resource and develop deep sea technologies for sustainable use of ocean resources, thus supporting India's blue economy. Development of technologies for the deep sea mining submersible. उसके बाद development of ocean climate change advisory services. Technological innovations for exploration and conservation of deep sea biodiversity. Deep ocean survey and exploration. Energy and fresh water from the ocean. Advanced marine station for ocean biology. Research Development and the Innovation RDI scheme. Research Development and Innovation scheme has been launched. Aim provide long-term financing and refinancing with long tenure at low nil interest rate to spur private investments. Rural Department, Department of Science and Tech, 1 lakh crore fund है. Encourage private sector to scale up RDI in sunrise domain and sector relevant for economic security, strategic purpose and self-reliance. Okay. Finance transformative project at higher technology readiness level. Okay. Two-tiered funding mechanism. Special purpose funding established within the Anusandhan National Research Foundation, acting as a custodian of the fund. ANRF was established under the ANRF Act 2023. Second level of fund manager, funds from the SPF are allocated here in the form of the long-term concessional loans or equity. आगे आ जाओ। सोडार, सोडार सोनार का भाई सोडार आ गया। तो सोडार क्या, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम फैसिलिटी हैज बीन inaugurated at the IMD Delhi. तो सोडार क्या करता है, सोडार करता है, इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द CSIR Advanced Material and the Process Research Institute AMPRI भोपाल. सोडार क्या है, सोडार works by sending sound pulses and subsequently monitoring the intensity and the frequency of the return signal. Specifically, it determines the lower atmospheric wind profile and temperature structure. Okay. Provide information on height of inversion, height of fog layer, strength of the turbulence, etc. Okay.
हंसा 3 एनजी क्या है? CSIR Science Technology Transfer Deal with a private firm to manufacture Hansa trainer planes. Hansa, powered by the advanced fuel efficient Vortex 912 कोई याद करने की जरूरत नहीं. Civilians offer large and world-class line training ecosystem strengthening India's aviation industry etc. कवच रेलवे के अंदर ही होता है. रेलवे announced कवच 5.0 will be implemented to upgrade Mumbai sub urban train travel. तो है क्या? Indigenously automatic train protection system designed to improve the train system efficiency. Towards assist loco-pilot your train platform by displaying signal in term and automatically applying the brakes if pilot fails to do so. Ensure the train operates smoothly even in the extreme conditions such as cold. Radio frequency identification tags are placed throughout the entire track to enable the coverage to track position and detect any potential safety issues along the route. ठीक है. Kinkenson technology. Next generation E10 Kinkenson trains are to be introduced in the simultaneously in India, Mumbai, and Ahmedabad bullet train project and Japan. Kinkenson technology it is Japan's high-speed bullet train. It is world safest and the most reliable high-speed, high-volume, high-frequency transport system. Key feature dedicated track for high-speed rail that is free of level crossings and ATC system, automatic train control system. Aerodynamics, optimization of leading shape, vehicle noise reduction, etc. तो ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स तो तुम्हें पता ही है कि ऑरेंज कलर का होता है, वही इसके अंदर लगता है और एक डेटा रिकॉर्डर होता है, बस यही है. तो है क्या? एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो रिकॉर्ड द ब्लैक बॉक्स ऑन द रैकेज ऑफ द इंडियन एयर इंडिया बोइंग 787. तो क्या है कि रिकॉर्ड डेटा ड्यूरिंग फ्लाइट, सोशल इंफॉर्मेशन, बाकी सारी बातें रिकॉर्ड करता है, हर चीज होती है इसके अंदर. comprise two critical flight recorder devices, flight data recorder, cockpit voice recorder. Bright orange कलर का होता है, हाई विजिबिलिटी के लिए होता है, made of strong substance like steel or titanium, are insulated from the extreme heat of cold. तो बच जाता है बेसिकली. उसकी कैसेट बचानी होती है, उसके बाद ये होता है कि किसको लेवल करना है, वहां से डिसाइड होता है. ठीक है. आ जाओ ऑल्टर मैग्नेट्स. ऑल्टर मैग्नेट्स क्या है भाई? Scientists from the SM Bose National Center for Basic Sciences discovered a unique duality in the alter magnet using chromium antimonide. About altermagnets. Altermagnets are a new type of the magnet material that combine the best feature of the ferromagnet and the antiferromagnet. Ferromagnets springs align in the same direction, resulting in the strong magnetism. Anti-ferromagnet springs alternate, thus cancelling each other, resulting in no external magnetism. Like antiferromagnet, they exhibit alternative springs, therefore no net magnetism. But due to their unique crystal symmetry, they show intense internal spin polarization, similar to the ferromagnet. Chromium antimonide shows the strongest spin splitting among known alternates. Accelerometer. Google Android earthquake alert system detected 18,000 earthquakes using phone accelerator. ले भाई ये तो करना चाहिए. A sensing devices that measure acceleration detect the frequency and the intensity of the human movement. Principle of the functioning accelerator meter works according to the Newton's law of motion. The force of on an object is equal to the mass times its acceleration. Can be measured both static acceleration due to gravity, dynamic acceleration, car crash. Okay. Key application: digital devices, smartphone, laptop, digital cameras for rotating display, vehicles used to trigger airbag, drones to stabilize their orientation mid-flights. Desalination technology. IIT Bombay scientists developed a new hydrophobic graphene-based lotus leaf like solar evaporators that can facilitate water desalination. It is desalination technology.
heating of saline water and the collecting condensed vapor to produce pure water. ये ना अभी यूज हो रहा है क्योंकि आईआईटी से छोड़ो वो ईरान वॉर के बाद इसी पे हमला होने की बात हो रही थी। मेनली सी वाटर डिसैलिनेशन, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट हो प्लस टू डिफरेंट। ठीक है, जितने भी आपके आइलैंड नेशन है उनको यही काम करना पड़ता है, पानी नहीं होता वहाँ। इवन पीछे अभी उनका भी खराब हो गया था, मालदीव से खराब हो गया तो पानी भारत में भेजा। Heat water in the pump through the semi-permeable membrane to filter out the dissolved solids. Usage mainly for the brackish water desalination. Mainly seawater desalination plant Tamil Nadu on the RO reverse osmosis RO osmosis. Largest desalination plant in the south. Tamil Nadu के अंदर लगा हुआ। South Asia का largest है। Mainly seawater desalination. On driver assistance system क्या है भैया? Union government is considering mandating the advanced driver assistance system ADAS जो गाड़ियों के अंदर आगे लगा होता है। ठीक है, एक कैमरा लगा होता है, वो रेडार होता है कि उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ ये गाड़ी कितनी तेज चल रही है, क्या चल रहा है, अपने आप ब्रेक मार लेते हैं। इन ऑल न्यू मॉडल ऑफ द ट्रक इन द बसेस, गाड़ियों में भी हो जाएगा। यूनिक सिस्टम बसेस अबाउट ADAS, a built-in suite for new technology that helps the driver to operate their vehicle more safely and avoid human error. ADAS sensors such as the LiDAR radar, LiDAR technology use हो रही है। The radar and the camera work together to inform the features such as the pedestrian detection and lane departure warnings. They include a range of features including adaptive cruise control, automatic emergency braking, blind spots detection, traffic alert, parking resistance, among others. Biostimulant. Minister of the Agriculture and the Farmers Welfare has withdrawn approval for the sale of 11 biostimulants derived from animal sources such as chicken feathers and tissue, etc. About biostimulants, definitions, substances and the microorganisms whose function when applied to the plant or rhizosphere is to stimulate natural processes to benefit crop quality independently of its nutrient content. Unlike biofertilizer, it does not supply nutrient directly. Unlike pesticide, it does not control the pest. Popular biostimulants: humic acids, seaweed extract, liquid manure compositing, and beneficial bacteria and fungi. They are regulated under the Fertilizer Inorganic Mix Control Order 1985. Biostimulants can improve nutrient availability and use of efficient solvent, foodstuffs, etc. Agrionics program. MIT announced that the transfer of the technology under the Agrionics program, a national program of the MIT, involves research, development, deployment, demonstration, commercialization of technology in agriculture and environment business. Rural Agency, Center for Development of Advanced Computing, CDAC, Kolkata. ठीक है, Metro Commission, Department of the Consumer Affairs commemorated World Meteorology Day 2025, marking its 150th anniversary of the Metro Convention. 1875, June Convention and its annexed regulation to ensure international unification and the improvement of metric system. Created International Bureau of the Winds and the Measures. मतलब metric system मतलब होता है कि बाई करने का पैमाना, universalize कर देना. To develop and maintain a universal measurement system. Significance: international collaboration in the methodology, global uniformity of measurement for research, trade, etc. India is a member. Yes. तो लॉजिक खत्म हो गई है हमारी। साइंस एंड टेक एक घंटे के अंदर कैच लोकेट की। इतने कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, मुझे लगता है कंटिन्यू एक घंटे के अंदर इतना पढ़ जाते हैं कैच एकदम। तो इसको अब हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरा है नहीं इच्छा कराने का कुछ। अब तुम्हारा एक महीना बचा है, ठीक है। अपने रिवाइज करो, पढ़ो, ठीक है, सेल्फ स्टडी करो। जितना मेरा सपोर्ट था मैंने कर दिया है। बीच बीच में मैं और भगवान सर कुछ लेंगे तुम लोगों के सेशन, यूट्यूब पे ले लेंगे जैसे लिंक, ठीक है। तो उनको आपको करना है, देखना है, ठीक है। वो सेशंस आपके मार्क्स मैक्सिमाइज करने के काम आएंगे, ठीक है। तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, समझ रहे हो।
तो वो काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएगा। तो अब हम उसमें डिस्कशन नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में भी वो आपको लाइव होगा तो लाइव, रिकॉर्ड होगा तो बता दूँगा। तो हमारा था इस सीजन में, तो ध्यान रखें आप लोग। थैंक यू वेरी मच। और अगर सही लगा हो तो लाइक कर देना और रिवाइज कर लेना, बेसिकली चीज़ें कर लेना, चाहे रिवाइज करना। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना, बेस्ट ऑफ लक।